A woman had to cut herself down there just to prove to her husband that she was bleeding and she was not giving consent to physical relations. This guy asks for proof. Show me that you are bleeding. Now, this is a scene. This is a particular scene in the new web series Chiraiya. The scene disturbed me, particularly the part where the guy is asking for proof. The audacity, guys. Now let that sink in. And let me make it very clear for people who do not understand this. This is not love. This is not marriage. This is control. This is dominance. And this is violence. And this is not just the worst part. Some people still think a husband has the right to demand proof, to question her body, to force her. If someone says I do, it does not give the right to do everything with that person. It's a strict no when it is said. Get that straight. Why can't men get this simple fact straight? I think God has made their brains vestigial. For those who don't know what vestigial is, go Google it and you will get a lot of clarity after it. Trust me when I say this. Sometimes God made man's brain vestigial. In this case, I can feel it. I went down on the comment section. I read this one particular comment where this guy was saying that basically the motive of this series is to say that अब मर्द अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता. कुछ बोलना नहीं था मुझे. There were no words left after रीडिंग और सीइंग एनीथिंग. तो मैं बस उसके बायो में गई उसको रिपोर्ट करने के लिए. मुझे उस महापुरुष के बायो में लिखा हुआ मिला है कि आई एम सर्चिंग फॉर अ लॉयल लाइफ पार्टनर. भाई भगवान करे आपको पार्टनर ही ना मिले, उसी में उस पार्टनर की भलाई होगी, वरना भाई आप तो सरफेस ऑफ अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए. आई विश यू डाई. आई लिटरली विश दैट पर्सन डाइज ब्रो. बिकॉज इस मानसिकता को रोकने के लिए और कोई चारा दिख नहीं रहा है मुझे, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. दैट्स द ओनली अदर ऑप्शन आई फील सो. नेचुरल डेथ नसीब हो आपको भाई साहब. Now the series has done a great job in showing this hard truth and show this mirror to the society जो कि वो मानना नहीं चाहते, बट ना मानने से कोई चीज़ गलत तो नहीं हो जाती. तो आई होप सबको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिले, बट कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता. एंड वट एवर आई हैव सेड इन दिस वीडियो, आई होप यू गेट दैट. Also, write down what are your thoughts on this comment and this particular series in the comment section.